And I really want to add in here that every session that comes up, you learn something interesting, and here we have all our lineup of speakers were there. A big warm welcome, sir. Thank you so much for joining in. We have our speakers, Shri Vasudev Devnani. Thank you so much, sir, for joining in. Dr. Ajay Data and Professor Ramesh Raskar with us talking about AI youth and responsible citizen. I'll now hand it over to Mr. Samir Jain, but before that, I'll just request him that if he can quickly felicitate all our speakers as well. Ladies and gentlemen, all our speakers, they take out time, they travel all along, they take out the time from really busy schedule, and the only way we can let them know that we are grateful for the time is to put a smile on our face and to bring the hands together and let them know that we are really grateful for their presence. So thank you so much to all our speakers for taking out time, and we are really looking forward to the session that talks about AI, youth, and responsible citizen. Over to you, our moderator, Mr. Samir Jain. Good evening, everyone. Our conversation will be a mix of Hindi and English, depending upon the comfort of the speakers. My name is Samir. I am with Primus Partners and, of course, have been advising governments and private sector on AI adoption. The topic here today is very, very curious to look at AI, youth, and democracy in one single sentence is an amazing feeling, especially in the world today where democracy is a threat in different forms and shapes. AI has created uncertainty in the markets and also the youth today is also determining the role they will play in making India the Viksit Bharat. So what is an amazing topic, and of course we have the most august audience, each representing different facets of how India takes an AI lead. From the government side, of course we have Ajay Data from the industry side, and then we have Professor Rakesh from the academia, and each of these three individuals have, in a way, a role in how India shapes up. So thank you, gentlemen, for coming here. I want to just start by giving you certain data points, right? We have all been talking about Viksit Bharat, that by 2047, India will be a developed nation. And another data point that is very important to understand is that the data says that till 2070, India will be the youngest nation. And then when we talk about this kind of the data point, then it's very important to see how the AI revolution is going to affect positively or negatively. Another data point that's important for us to really look at is that 20% of the global data which AI leverages comes from India, right? And what are we doing about it? So when we look at it all, I think it becomes very important conversation in what we need to do as the different constituents to really take India into the pole position when it comes to AI adoption, and our Viksit Bharat is an AI-led Viksit Bharat. So we would really love to know from these gentlemen. So sir, पहला question मेरा आपसे इस उसमें है sir कि ये जो scale है AI का sir, इसमें बहुत सारे aspects आते हैं. हमको youth को skill करना है, education देना है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होनी चाहिए, हम सॉवरेनिटी की भी बात करते हैं. तो उस पक्ष में आप कैसे देखते हैं कि जो गवर्नेंस है, जो गवर्नमेंट का जो एक कमिटमेंट है अपने सिटीजन्स के प्रति और एआई का जो रोल उभर के आया है, उसमें आप कैसे देखते हैं गवर्नमेंट का रोल, और मोर सो इसमें राजस्थान गवर्नमेंट क्या देख रही है? एआई एक ऐसा टूल है जिसकी उपयोग आज के ज़माने में आवश्यक हो गया है. चाहे जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, गवर्नेंस भी उसके अंतर्गत आ जाती है, और लेकिन इसका जो उपयोग हो वो ब्लाइंडली नहीं हो. उसको जानना, अप टू इन्फॉर्मेशन हम उसका उपयोग करें. इन्फॉर्मेशन के बाद थोड़ा उसको अपने स्टेट के या अपने कंट्री के संदर्भ में उसका एनालिसिस अवश्य करें कि वेदर इट इज सूट्स अस और नॉट. Everything can't suit to everyone at every place, in every state, in every country. उसका एनालिसिस करना और उसके बाद उसमें से जो अपने उपयोगी पार्ट है उसको यूज़ करना. नॉट ओनली ब्लाइंडली, बिकॉज एआई ने इंफॉर्मेशन दी है. एआई क्या है?
एआई एक मशीन है, वो अपने को जो कुछ भी उसे फीड है वो अपने को रिटर्न में आप जो कुछ भी उससे क्वेश्चन करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन चाहते हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देता है। लेकिन उस इन्फॉर्मेशन का अब गवर्नेंस के रूप में, गवर्नेंस कई प्रकार की होगी, सिटी के लिए भी होगी, रूरल एरियाज़ के लिए भी होगी, गरीब के लिए भी होगी, अमीर के लिए भी होगी, कोई रूल्स के लिए भी होगी। तो नॉट एप्लीकेबल टू एवरीबॉडी, एक डंडे से सभी को नहीं हाँका जा सकता। एआई को आप पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, हो सकता है उसका कंटेंट आपके लिए नियर बाई हो जो आप सोच रहे हो, लेकिन नॉट 100% इट विल बी देयर, बट इट शुड बी यूज्ड, इट कैन बी यूज्ड, बट ओनली नॉट द ब्लाइंडली, बट इन अवर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, in the interest of the nation, in the interest of the state. थैंक यू सर। सर मैं आपसे वापस मिलूँगा राजस्थान के संदर्भ में। एक बहुत बड़ा इशू जो मैंने एक बात अभी बोली थी कि 20% जो डेटा है वो इंडिया जनरेट करता है। ये अजय डेटा जी के लिए सवाल है ये। और एआई के पूरे मॉडल्स ही उस डेटा पे बिल्ड हैं। जैसे सर ने भी ये बात बोली कि अल्टीमेटली जिस तरीके से हम अपने सिस्टम्स को ट्रेन करते हैं उस तरीके से हमें आउटपुट देते हैं। सो एक मेजर कॉन्वर्सेशन इसके अराउंड हो रही है डेटा सॉवरेनिटी को लेके कि जो भारत का डेटा है वो कितना हमारे कंट्रोल में है। एज ऑफ नाउ चाहे हमारे पॉलिसीज़ हों या हमारे सिस्टम्स हों, वो उस डेटा सॉवरेनिटी को कंटेन नहीं करते हैं। Ajay ji talks a lot about it. He is also a very established author on the topic of AI and also one of the youngest learner of AI systems. So Ajay ji, data sovereignty पे आपका क्या कहना है और how should India prepare for it? देखिए, डेटा सॉवरेनिटी का मतलब है डेटा की जो ओनरशिप है वो हमारे पास रहे, हमारे कंट्रोल में रहे, हमारे फिजिकल कंट्रोल में रहे और बाहर नहीं जाए। बेसिक कॉन्सेप्ट उसके पीछे ही है। पिछले 10 सालों में भारत ने अपना सारा डेटा बाहर दिया है, तो उसी का नतीजा ये है कि हमारे जो एआई मॉडल्स हैं वो हम नहीं बना पाए। हमारे डेटा से ही विदेशी कंपनियों ने, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो मेटा हो या चैट जीपीटी हो या गूगल हो, जो भी हो, सारा डेटा उनके पास गया है। हमने कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज़ किया है, हमने हमारा डेटा दिया है, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू जरिए दिया है, चाहे फेसबुक के जरिए, चाहे यूट्यूब के जरिए, चाहे ईमेल्स के जरिए, सारा डेटा बाहर गया है। नाउ अब नीड क्या है, हमारे पास हमारा लैंग्वेज का डेटा है, जो हमारे पास एक होप है उसके अराउंड कुछ काम करने की। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारे को हमारा डेटा रिटेन करना चाहिए। लेकिन एआई में हम पीछे रह गए, इसका मतलब नहीं है कि हम जिंदगी भरी पीछे रहेंगे। अभी लगे एंड में, तो अगर हमारे को अगले 10 साल में एक नई टेक्नोलॉजी आएगी, एआई इज़ नॉट द एंड ऑफ टेक्नोलॉजी वर्ड। नई टेक्नोलॉजी आएगी, क्या नई टेक्नोलॉजी आएगी? वो एआई का एक नया वर्जन आएगा। वो नया वर्जन कैसे बनेगा? उस नया वर्जन के लिए डेटा चाहिए होगा। अगर हमने सॉवरेनिटी को फाइनल नहीं किया, अगर हमने उसको डिसाइड नहीं किया कि हमारा डेटा हमारे पास कैसे रहे, तो हम वो लड़ाई भी हारेंगे 10 साल बाद। तो हमारे को लड़ाई आज की नहीं लड़नी है, हमारे को 10 साल की तैयारी करनी है, जो हमने पहले 10 साल में खोई है। वो लड़ाई लड़ने के लिए हमको छोटे छोटे बहुत सारे डेटा सेंटर्स बनाने होंगे। एक तरह से हम बात करें तो उसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनानी पड़ेंगी डेटा की, जो वहाँ पर उस डेटा को लर्न करेंगे, ट्रेन करेंगे, नए नए मॉडल्स बनेंगे, एसएलएम और एलएलएम्स बनेंगे, जो हमारे खुद के होंगे, हमारे डेटा पे होंगे, हमारे लिए उपयोगी होंगे और हमारा डेटा बाहर जाना कम होगा। आज सोच के देखिए कि हमारा डेटा गया, उससे उन्होंने ट्रेन किया और $20 पर मंथ में हमें बिक रहा है उसी की लर्निंग से। दैट इज़ व्हाट वी इज हैपनिंग राइट नाउ। सो आज हमको वो चीज़ अगर चेंज करनी है, इसलिए मैं इस बात का फुल फेवर में हूँ कि हमारे स्टेट के डेटा सेंटर्स बनने चाहिए, हमारी सब कुछ हमारा होना चाहिए। इंस्टेंट मैसेंजर हमारा होना चाहिए, सोशल मीडिया हमारा होना चाहिए, यूट्यूब हमारा होना चाहिए। चाइना हमसे आगे क्यों निकलता है? बिकॉज उन्होंने ये चीज़ फॉलो की पिछले 15 साल में और उन्होंने अपना डेटा अपने पास रखा, सॉवरेनिटी उन्होंने फॉलो की। हमको ये लगता है वो हमसे आगे निकल गया। आगे इसलिए निकल गया कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने इसलिए निकल गया, उन्होंने 10 साल पहले कोई पॉलिसी लेकर के आए थे, उसका रिजल्ट उनको आज मिल रहा है। सेम चीज़ हमको अब करना है। तो अगर हम स्टार्ट करेंगे, हमको बहुत इजी लगता है व्हाट्सएप चालू कर लो, माइक्रोसॉफ्ट को डेटा दे दो, गूगल को डेटा दे दो। आई थिंक वी सेल आवर फ्यूचर। तो अभी कई बार क्या करती हैं फॉरेन कंपनीज आकर के आपको कहेंगी ये फ्री में ट्रेनिंग टूल ले लो, फ्री के अंदर ये चीज़ ले लो। वो फ्री नहीं कर रही हैं, यू आर द प्रोडक्ट, इट इज़ द स्ट्रेटजी टू टेक योर डेटा। तो हम लोकल कंपनी को तो पैसे नहीं देना चाहते और फ्री में डेटा उसको दे देते हैं। अल्टीमेटली 5 साल बाद वही नई टेक्नोलॉजी आएगी और आपसे चार्ज करके पैसा लेगी आप ही के डेटा पर। दैट इज हाउ इट इज हैपनिंग राइट नाउ इफ वी लुक एट इट वेरी क्लियरली। तो इसलिए सॉवरेनिटी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हमारा देश का, हमारे स्टेट का फोकस होना चाहिए सॉवरेनिटी के ऊपर और उसके ऊपर हमारा बहुत इन्वेस्टमेंट और ताकत होनी चाहिए। और आज स्पीकर सर सुन रहे हैं हमारी इस बात को, तो मेरे ख्याल से ये बात कहीं ना कहीं आगे जाएगी और इसको डिस्कस करेंगे कि ये किस तरीके से और आगे बढ़े। थैंक यू अजय।
Professor Ramesh, I have a very existential question to you. If we look at the last 4 decades worth of revolutions or evolutions that have happened, whether it was introduction of computers or internet or even mobile telephony, India has traditionally been an adopter of these technologies which had its own time in terms of how it matures, and then India adopts that technology. Uh, in a way, I'm saying that India had a runway, right? But in the age of AI, where the knowledge boundaries have diminished, India may not have that kind of a leeway in terms of how it waits for the world to make innovations in the case of AI. And because you have seen both sides of it as an Indian, but also because you are a part of the innovation capital of the world in the US, I would want to really ask you in the sense, and because we are talking about the topic of youth, how do you see this play out for India if India doesn't really get its sets together? And what would be your suggestions to the youth and the startups and many more? That's a very good question, right? So if you think about these revolutions, and by the way, I have this honor of sitting next to somebody whose name is Data, right? So I feel like I'm in Star Trek. Mr. Data is right here. And it's wonderful to also have, dear speaker on this. And we had a conversation before in the green room before coming to this panel. And I'm really glad you're asking this question about what does it mean for the youth? Are they going to be consumers of inventions, innovations somewhere else? Or will developing countries like India will have a role to actually contribute to this revolution? So Mr. Data from Star Trek here made a very good point about data sovereignty. And I would say, although in the previous revolution, India didn't get to play a role as a leader, this one is actually very interesting because it's about data. And if you think about what are the strengths of India and what are the weaknesses in India, right now we're kind of in a wartime in the AI zone, right? So the next 3 years are very critical. So the strength for India is plenty of data, plenty of talent, especially entrepreneurial talent. But third, most important, is a very good digital public infrastructure, like Aadhaar, UPI, ONDC, DigiLocker, and so on. The weakness, on the other hand, for India is lack of access to compute and lack of instantly deployable capital. So when you're in a war, should you focus on your strength or should you spend time trying to overcome your weakness? Right? In war, you just focus on your strength. And I think India is very well poised, in my humble opinion, to piggyback on that and take on the revolution. Mr. Data here said that we're moving from large data centers to micro data centers, and there are nano data centers which are actually these things, right? So your phone, your laptop, your computer, your office machines are themselves the nano data centers now. And that allows us to jump into a new revolution of AI agents. So instead of thinking about AI, we can think about AI agents that are working for us. It's like our digital twin. It's like our assistant that's working for us for ourselves. Now, I'm very delighted that Rajasthan is the first state where every citizen can have their own email address and every citizen can have their own single sign-on, right? And I was delighted to just meet the IT secretary of Rajasthan, and he said, yeah, we're very proud of this. So I think Rajasthan also could be just one step away from not just having a phone number, an Aadhaar card, an email address, and a single sign-on, to also having a AI agent for every Rajasthani citizen. So me and Mr. Data here are making an announcement about what we can do in Rajasthan. I'll let Mr. Data make that announcement. No, please do. Please go ahead. No, please. Okay, so we're going to work together on something that we have been working on in the US called Project Nanda. So that's my henna. My niece did it for one of the events, Project Nanda. Can you zoom in on this? All right. So it's Project Nanda, right? And
and it stands for Networked AI Agents in Decentralized Architecture. It's a mouthful, but it's the name of my sister. Right. So, and as you know, Nanda means joy. And the goal is to create an AI agents for everybody. So, if Sita Bai from, Calcutta says, "Mujhe to Ajmer jana hai, मैं सुनी बहुत अच्छा जगह है, मैं क्या करूँ?" Right? There's no way for us to do anything right now. She has to go online. She speaks Bengali. She doesn't know how to, look at local languages. She has to call up hotels or homestays, and all. It's very complicated. But imagine if, everybody has an agent, AI agent, and she just speaks to it on her phone, and everything magically is taken care of, as if there are 10 assistants helping her with her travel, right? And similarly, if every citizen in Rajasthan has also their own AI agents, then they can cater to Sitabai, who's sitting in Calcutta, right? So this is turbocharging the AI economy. And to your point, then you're not just a follower and just using ChatGPT and Claude as a user, but now you're creating a whole commerce, whole economy around AI agents. So Mr. Ajay and I are announcing that we're going to work with the Rajasthan IT department, IT secretary, to launch an AI agent for every Rajasthani citizen. And I'll let Mr. Data describe the name of the project. No, so I think we are going to work together. That's what we just decided. That's how these conferences move. But Ramesh, I want to add one very important point about, which will shock most of you, about how data centers are moving. So electric cars are coming. We all know EVs, electric cars are coming. So what Elon Musk has announced, and that will replicate in India, that every car can have a server. Akhilesh ji, sun rahe ho aap? Every car can have a server. Literally, because there is a battery. So it will never go power off. You charge. So every car literally have a server, which means every car can take data and always available. So imagine you need not to create a large data center. You have 100,000 cars serving server, and that car will become a data center, and it will charge rent from the data center provider. Imagine the model. So we will have, rather than the large buildings of 10 floors, 5 floors, you have every car serving data. So every car will have data, their copies, their availabilities, and 24/7 available through Starlink satellite and the data center available. Now, with this democratization of the data centers and the servers available and the edge devices having data, this will just completely change everything. And this is the opportunity for India. Why? Because India will have the largest cars and the largest devices available on the world. And that's the power we will have. Because everybody is investing in that already. So no big company need to invest. It need to just bring the technology in place. So I think this is very well said, Ramesh, and we are thinking about a name of the agent. We have recently decided Mera AI as a name of the project we will have for Rajasthan, and probably soon we will start working on that and probably launch before February, when our Prime Minister inaugurate the AI summit in Delhi. A very big round of applause for these two gentlemen for taking Rajasthan to the newer heights. Professor Ramesh, I fully agree with you, and I've been supporting Rajasthan, so I know how Rajasthan has always been a leader when it comes to technology adoption, including the startup ecosystem, which is world's one of the best. So sir, उसी में मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, because हम लोग democratization की बात करते हैं, and I always make a point that in a country which is so disparate, यहाँ पे हर कदम कदम पे लोग बदलते हैं, लोगों की demography बदलती है. Technology is a very biggest leveler. It's a very transparent ecosystem, and AI can only make this better. So मैं ये चाहूँगा कि while industry is adopting, government of Rajasthan इस बारे में क्या कर रही है कि it is adopting AI. जैसे एक example तो अभी अजय जी ने बताया. Overall, what is the landscape that Rajasthan is looking at in terms of adopting AI to deliver better quality of life to the citizens? गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान निश्चित रूप से इसको बढ़ावा भी दे रही है और बढ़ भी रही है, लेकिन सम प्रिकॉशंस के साथ, क्यों दे आर एसेंशियल. जैसे आम व्यक्ति के लाइफ के लिए
जैसे डॉक्टर है, वो कई बार अपने इलाज में इसका जो उपयोग करता है, उसको गरीब से गरीब व्यक्ति को भी लाभ मिलता है, राजस्थान को लाभ मिलता है। किसान है, उसको अपना लाभ मिलता है। और टीचर है, वो अपनी टीचिंग को भी सरल बना देता है, क्योंकि अभी जो जिस प्रकार से पढ़ा रहे थे उसमें जैसे ही एआई के, अभी मैं जब राउंड कर रहा था तो 5वीं के बच्चों के लिए भी किस प्रकार से वो सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं, आई सॉ दैट। तो मुझे लगता है कि आज, लेकिन इसमें जो एक खतरा मुझे लगा, यदि हम बहुत इस पर डिपेंड करते रहे तो हमारी जो बुद्धि है वह कहीं ना कहीं कमज़ोर होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए दोनों का समन्वय चाहिए हमको आज के दैनिक लाइफ में, और पर्टिकुलर राजस्थान जो भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा स्टेट है इन इंडिया, तो उस भौगोलिक स्टेट के कारण हर चीज़ हर जगह पहुँचे वह कठिन होती है। लेकिन एआई के माध्यम से हम इस चीज़ को बहुत नीचे से और दूर तक इसको पहुंचा सकते हैं। तो और यहाँ पोटेंशियल भी है, और पोटेंशियल होने के कारण यहाँ पे जो हमारे युवा हैं, दे आर आल्सो इंटेलिजेंस, और कई इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो इसको काम में भी ले रहे हैं। तो मैं समझ राजस्थान सरकार इसको बढ़ावा देने के मूड में है, और ये जो यहाँ डिजीफेयर हो रहा है ये उसका एक पार्ट एंड पार्सल है कि राजस्थान गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है, और राजस्थान गवर्नमेंट चाहती है कि इन सब चीज़ों को हम अपने स्टेट में बढ़ावा दे करके, और जो आपने पहले कहा कि मोदी जी का जो 47 का सोच है उसमें राजस्थान का भी रोल मैक्सिमम हो, उस अनुसार पॉलिसीज भी बन रही हैं। और नई नई आईटी और टेक्नोलॉजी में हमारे मंत्री महोदय जो उद्योग मंत्री हैं वो भी इस पर सोच रहे हैं, कुछ नए विधेयक भी ला रहे हैं, एक्ट भी ला रहे हैं, ताकि हम आम जनता के लिए रहें। लेकिन एक ही मन का जिस पे काम हो रहा है कि आपके जैसे डाटा सेंटर और डाटा की बात आई, उसको सिक्योर भी रखते हुए, क्यों सिक्योरिटी इज आल्सो द रीज़न, क्यों नहीं तो सारे डेटा किसके पास चले जाएं, उसका कैसे उपयोग होगा। आज की टेक्नोलॉजी इतनी है कि हर एक की वॉइस भी कैप्चर की जा सकती है, और फोटो तो कैप्चर होना शायद बहुत सरलतम हो गया है। तो इन सब चीज़ों से क्या क्या इसके प्रिकॉशंस लेनी है, उसको करते हुए गवर्नमेंट इज अडॉप्टिंग इन एवरी फील्ड, पर्टिकुलर फॉर द किसानों के लिए और उद्योगपतियों के लिए तो है ही। उद्योगपति तो कई अपना, जैसा आपने कहा, सर्वर वगैरह लेकर के उद्योगपति तो अपना अपना वहाँ पे सेट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को उस अनुसार चल रहे हैं, उससे उनका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो इन सब लेकर के राजस्थान गवर्नमेंट इज थिंकिंग, राजस्थान गवर्नमेंट डूइंग एवरीथिंग। मैं समझता हूँ यहाँ के यूथ को निश्चित रूप से इसको अडॉप्ट करते हुए इसकी स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। और अभी पोटेंशियल है तो पोटेंशियल का स्किल चाहिए, और इसके लिए आवश्यक है राजस्थान में कुछ डाटा सेंटर्स और एस्टेब्लिश हों। डाटा सेंटर के साथ एआई ट्रेनिंग सेंटर, बट आई सजेस्ट माय डिपार्टमेंट आल्सो यस्टरडे कि एआई ट्रेनिंग सेंटर्स भी कुछ जगहों पे हम इसको एस्टेब्लिश करें, अदरवाइज एआई का सही उपयोग भी नहीं होगा। यदि ट्रेनिंग होगी तो फिर एआई का उपयोग भी सही होगा, और आम जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है उस तक पहुंचेगा, और उसकी इंटेलिजेंसिया को भी एआई के साथ कोलैबोरेट करते हुए हम शायद राजस्थान को देश के अंदर अग्रणी राज्यों में हम इसको ला पाएंगे। धन्यवाद सर। वैसे तो आज हम लोग एक स्पेसिफिक टॉपिक की बात कर रहे हैं, बट कल का दिन एक रीजनल एआई समिट के लिए भी रखा गया है, जहां पर हम बहुत डिटेल मुद्दों पे बात करेंगे, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट की बात होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी। तो प्लीज़ फाइंड टाइम टू अटेंड द रीजनल एआई समिट टुमारो। Just moving on, I go to Professor Ramesh. Just again, there are more than 2,800 engineering colleges in India, and just in the last 2 years, more than 700 launched engineering courses in AI. My son also took an admission into an engineering course this year, and when he started his classes, he was told that he can go to Gemini Pro, there is a free version available, and then of course you can go to YouTube to take courses, which I think is a very scary thought, that India generates, or India creates more than 20 lakh graduates every year, right? And if they don't have the right foundation into these new technologies, I don't think India can take that lead position. Because you are in the field of academia, I would really want to know what would your recommendation to be the Indian academic ecosystem, so that it can actually provide the right foundation in terms of really creating the skills and competence in today's youth which can meet global standards.
Yeah, it's definitely a very challenging scenario where if the knowledge economy is replaced with AI, what happens to knowledge economy? I'm not so worried. I'm not too worried. I think as long as people continue to build skills like critical thinking and problem solving, interpersonal communication, scenario planning, and so on, those skills are very important. But I think the rote skills, like you mentioned, of pure coding or pure design and so on, are definitely at risk. I think one way to overcome that, again, is through the concept of AI agents. It's like saying if 30 years ago, if somebody was creating slides and presentations, but then PowerPoint came along, and then PowerPoint destroyed all those jobs. That's not true, because PowerPoint made the ability to create presentations easier, but every slide deck actually looks very different from each other. So maybe 80% of it is coming from PowerPoint's smartness, the remaining 20% is coming from our own creativity. And we have an opportunity where we can do the same thing for AI. Let me talk about the negative scenario first. The negative scenario, the dystopian scenario, would be where we all have one major agent given to us by ChatGPT or Gemini, and everybody does the same thing. There's exactly one diabetes agent for the whole world. There's exactly one math teacher for the whole world. There's exactly one financial advisor for the whole world. And all the millions of financial advisors, millions of math teachers will have nothing left to do. They will not lose job, but the job will be soulless. There will be nothing left to do, right? That's the dystopian world. A not so dystopian world, maybe a glorious world, is where it's more like PowerPoint. Everybody has an 80% of software that comes cookie cutter, but the last 20% is what you personalize. So every math teacher says, मैं आपको इंदौर में सिखाती हूँ. I know Diwali is coming. She's going to maybe contextualize it. She knows one of her students is having problem at home. She's going to contextualize how to teach math for her own student. And if she has her own AI agent, then it's easier for the math teacher agent, to create an agent that will interact with her students' agents and teach math in a very personalized way. So this is critical. If you're a financial advisor, any job you're in, any knowledge economy worker you are, ability to create your own AI agent is going to be very critical. So the way to overcome the risk that start creating teams, maybe my agent and Dr. Ajay's agent starts creating a team, they start creating an instantaneous company to go together. Then like 100 agents come together and they start doing collective bargaining for certain deals or certain shopping or certain contracts and so on. So I think that's where we're going to get in a whole new world of AI agents. So to answer your question, it's not enough to start AI courses. It's very important to start courses for creating AI agents. Yeah. And those courses actually going to start looking like art courses. It's like your own creativity, your own personalization of it. And those are the ones that we need to start creating. But I think it's a good trend that they already start thinking about AI courses. Very quickly, they should switch to AI agent courses. And again, I think Rajasthan could be a leader with the Mera AI platform, that we all discussed here. How many like the name, by the way, Mera AI, for AI agent for everybody? And who doesn't like it? Okay, all right. So we want to talk to you. We want to hear your suggestion for what the thing is called, because tomorrow morning we're going to launch the AI agents. So you'll be having an agent called Mera AI. What's your name, by the way? What's your name? Abhay. So there'll be, Abhay agent, and it'll be on Mera AI. So we have to make sure we do that. So I think it's a very exciting time to think about AI agents beyond AI. I agree with you. In fact, for the last 3 decades, India has been just floating along, taking the lower side of the value chain as software developers, where we played on the volume. And in AI, we actually have a black swan moment where, as he rightly said, the focus on critical thinking, focus on innovation, focus on core subjects, whether it's medical sciences, whether it is arts, etc., can actually take a forefront rather than just software development. And that's where I think the opportunity comes in, and how we educate the youths of today beyond
traditional software development. So thank you, Ramesh, for that. I think there's a lot of ideas we can take from it. I think there's another important area to look at, which is the startups. Right? Rajasthan, through its iStart program, has created world's benchmark when it comes to how startup ecosystem is developed. It's not a yesterday story. Took time, but today when you look at its policies to the infrastructure that we provide to the startups, I think Rajasthan is a leader. But I also realize that in the, again, the age of AI, are startups using the existing softwares and then building solutions, or actually creating the platforms and the stacks and the solutions that the world consumes. So, Mr. Data. No. So I was just telling about the whole startup ecosystem. India has done tremendously well in adding more and more startups to India, and Rajasthan has taken a lead with that. But again, AI has challenged the way startups look at. Today's startups are making agents, no two ways about it, but again, the background of it is on chat GPTs, etc. And if we were to look at data sovereignty, or if we were to look at India playing a global role for all of its youth, then the startups also have to change the way they build solutions. So no longer should we be just a user of AI, but also creator of AI. Where is our own chat GPT? Where is our own Gemini, etc.? Mr. Data, you have been associated with the startup ecosystem in your own capacities, but also the state government. So I would really like to know, how do you see the startups kind of changing that mindset in taking a much more of a global mindset profile when it comes to using AI or building AI solutions? See, according to my little bit of experience of last 3 years in AI, I believe that what we can do right now at a very fractional cost is do training of open source LLM and use them the way we want, rather than completely building something from scratch right now and reinventing the wheel. As of now, till we do not have a very cost-effective, less tokens consumed, and deliver something which OpenAI or Gemini or Copilot is not able to deliver from the structure and technology perspective. If we have to create a generative transformer, for example, then how it is going to be different? Is it going to be 5% different, or is it going to be 95% different? This will depend upon how much money we put in and how much compute we need in. I think the clear winner right now in future is going to be the person who can run a LLM or SLM on a CPU rather than a GPU, who can run on a low-grade, consumer-grade hardware rather than a very high-end NVIDIA GPU, which comes to you in 20 lakh rupees. This is where, and this is the bottleneck as of now for all the startups. And they'll end up using the APIs and they try to build the solutions, which is okay right now if you are building a solution to deliver something else, but can't compete in AI. You can't compete on a translation, for example, or creating an image, for example, creating a video, for example, writing a content example. It is almost, the cases are gone. It's very, very difficult to fight those cases. But if you are building some enterprise application and use a little bit of AI around that to validate a video, do analytics, do image analytics, then you can probably do something and make some money. For future, I think as all the startups who are using AI right now as an API, AI per se will not give you an edge. The solution will give you an edge if you can build something around that and build your own models around that, build your own training around that. And if you give me 30 seconds, I can share an example. So in Ramesh, what we did, we built an agent, voice agent, and what it does, speaker sir, that agent, जो voice agent है, वो लोगों के इंटरव्यू लेता है, जिसको हमारे यहाँ नौकरी करनी होती है. So अभी जो नौकरी करने के लिए इंटरव्यू आता है, पहले एक HR मैनेजर लेता था, अब वो वॉइस एजेंट लेता है. हमने उसको ट्रेन किया है, हमने वो AI बनाया नहीं है, हमने उसके AI को यूज़ किया है और हमने मल्टीपल मॉडल्स यूज़ किए हैं और उसमें हमारी इंटेलिजेंस डाली है साथ में. तो हमारी इंटेलिजेंस हमारे पास है और वो मॉडल्स वहाँ पर हैं, उनको यूज़ करके हमने वॉइस एजेंट बनाया है. नाउ हमारे करीब 300 इंटरव्यू हम कर चुके हैं उसके अंदर, अप्रैल से लेकर अब तक, और सारे के सारे इंटरव्यू जो हैं एक वॉइस एजेंट एक इंसान के कर रहा है और उसको फेल पास कर रहा है ऑलरेडी.
तो हमारा HR मैनेजर फ्री हो गया। उसका फ़ायदा ये हुआ कि इंटरव्यू 24 घंटे में 365 दिन में कभी भी कर सकते हो, क्योंकि इंटरव्यू देना है सामने वाले को, ये एजेंट तो हमेशा अवेलेबल है। एंड नाउ इमेजिन द मॉडल इज वॉइस एजेंट अवेलेबल है, दिस कैन नाउ रिवोल्यूशनाइज बैंकिंग, इंश्योरेंस, सपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस, पुलिस डिपार्टमेंट। 100 नंबर पे कॉल आता है, एजेंट रह सकता है और उसको सॉल्व कर सकता है। एवरी पर्सन हु इज पिकिंग ए कॉल और टॉकिंग ऑन फोन, दिस प्रोसेस कैन बी रिप्लेस्ड बाय एजेंट। नाउ अब आप इस पर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, पॉलिसी बना सकते हैं। मेरे को लगता है अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है हर स्टार्टअप के लिए, लेकिन उसको थोड़ा काम करना पड़ेगा उसके ऊपर यूनिकनेस करने के लिए। और AI फाउंडेशनल बनाने की हर स्टार्टअप को जरूरत नहीं है, इट इज़ वेरी लिमिटेड स्कोप ऑफ वर्क। लाइक इसको मैं एक दूसरे एग्जाम्पल में लें, आज तक हमने कितने ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाए हैं? क्यों नहीं है? क्योंकि इट रिक्वायर्स अ वेरी लार्ज काइंड ऑफ मनी इन्वॉल्व, लार्ज काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व। कितने सारे हमने ईमेल सर्वर्स बनाए हैं, कितने सारे हमने ऑफिस सॉफ्टवेयर बनाए हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कंपटीशन क्या है आपके पास? ये सब नॉर्मल सॉफ्टवेयर्स हैं, फिर भी नहीं है, क्योंकि ये सब जो है एंटरप्राइज एप्लीकेशंस हैं, इनको बनाने के लिए बहुत पैसा लगता है और बहुत टेक्नोलॉजी लगती है। तो ये एक AI भी सिमिलर टाइप की चीज़ है, इसको हर आदमी नहीं बना सकता है और हर आदमी को अटेम्प्ट भी नहीं करना चाहिए। इसको यूज़ करके हमारे को क्या पावरफुल चीज़ बना सकती है इंडिया, वो बनाना चाहिए, और हमारे डेटा के ऊपर धीरे धीरे वर्किंग करनी चाहिए, सोवरेनिटी के साथ कनेक्टेड करके हमको अपॉर्चुनिटी बनानी चाहिए। All startups have a great future. We have 7,300 startups in Rajasthan. Rajasthan has done a great job. लेकिन उन startups को कैसे बड़ा बनाएं, कैसे हमारी startup, एक में पर्सन बैठे हुए हैं ब्रेनो, यहाँ पर सामने बैठे हुए हैं, and he was with me on a session. He is raising hand. This company of Jain Spark made $50 million in 4 months from launching the agent, and it's a unicorn already. His founding member is sitting here. You should all meet him. And this is a startup again. $40 million, $50 million in 4 months. करीब करीब आप 100 से गुना कर दो तो आपको 4,000 करोड़ रुपए के आसपास की, 400 करोड़ रुपए के आसपास की आपकी रेवेन्यू उसने बिल्ड कर ली 4 महीने में। इमेजिन, ये स्टार्टअप्स की कहानी है, और एक बिलियन यूनिकॉर्न बन गई तो 9,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन बन गई 20 महीने में। दिस इज द पॉसिबिलिटी। ये जो पॉसिबिलिटी है स्टार्टअप्स के लिए, ये सामने एग्जांपल है। ब्रेनो, इनका एक हाथ की हाथ एक अनाउंसमेंट और कर देता हूँ इनके बिहाफ पर, हमने उसमें सेशन में भी किया था। जितने भी स्टार्टअप्स यहाँ बैठे हुए हैं या जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनका एक एजेंट है जैन स्पार्क, फ़ोन पे मिलता है, अवेलेबल है, फ्री अवेलेबल है जैन स्पार्क। उसके 1000 क्रेडिट्स हर TGS के लोगों के लिए फ्री हैं, जिसकी वैल्यू 3,000 रुपये है, हर एक के लिए फ्री है। इन्होंने अभी अनाउंस किया है दोपहर में। तो ये उसका जो एजेंट का फ्री मिलने का तरीका है, वो टाई ग्लोबल समिट के ऊपर जाकर के आपको रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे ये चाहिए, और आपको वो लिंक मिल जाएगा करने के लिए। दिस इज फैंटास्टिक टू एक्सपीरियंस हाउ द एजेंट्स वर्क, बट दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड ग्रेट एग्जाम्पल वी हैव राइट नाउ इन आवर कॉन्फ्रेंस टू बिल्ड समथिंग विच nobody has seen before. Thank you, and congratulations, Plino. As we end, gentlemen, one lot of learnings, lot of great ideas. There's a study which says that by 2030, AI alone would add $2 trillion to Indian economy. Amazing, right? So coming back to the topic of AI, youth, and a responsible democracy, I want to have each of you give one big idea that can actually help India achieve that $2 trillion ambition just from the AI alone. Just one big idea. We start with you, Professor Ravi. Yeah, I'll repeat what I said earlier, which is if everybody has their own AI agent, Mera AI is what we're going to call, I think we'll have not one Jain Sparks, but maybe 1,000 Jain Sparks, solving problems they're not even thinking about solving today. So think about fields like water or sanitation or mining. You know, the top students from MIT or IT don't go into those fields. You know why? Because these fields don't have 30%, 40% profit margins. They have 1%, 2% profit margins. So nobody wants to go and work in the field of water. But imagine, because of AI agents, if these fields have profit margins of 40, 50%, a lot of smart people will start working in these other sectors, so-called the wash sectors, like water, sanitation, health, access, and so on. So imagine the smartest people in the world working in important social sectors
because they have become extremely lucrative because of AI and AI agents. Because the productivity is increasing by a factor of 2 or 3. So when they're making 1% profit, now they're making 10% profit. They're making 40% profit. That's the world I want to see by 2030, where all the top candidates, the top candidates don't go work for a software company or a consulting company or a bank, but they go all work in social sectors because they're more lucrative than the sectors today. Absolutely, I agree. Mr. Data? I love the example of a startup called Zepto. Zepto कितनों ने सुना है? Zepto? बहुत ने सुना। कहानी पता है आपको Zepto की? कोविड टाइम में 23 साल के बच्चे ने जब सब घर में बंद थे तो एक छोटी सी वेबसाइट बनाई कि आप बताओ आपको क्या चाहिए, मैं ला के दूंगा। और उसने वो चालू करा, सब्जी, अंडे, ब्रेड, दूध, और जाकर के देने लगा। यही काम इतना पॉपुलर हो गया और इस प्रॉब्लम को क्या सॉल्व करी? घर बैठे आपको सामान मिल जाए, छोटा सा। $7 billion वैल्यूएशन टुडे व्हाइल आई एम टॉकिंग टू यू। कितनी? 7 बिलियन। कितने रुपए होते हैं? अराउंड 60,000 करोड़ रुपीज। कोविड कब था? 5 साल पहले। 5 साल में 60,000 करोड़ रुपए एक स्टार्टअप। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हमको सीखना क्या है? वैल्यूएशन नहीं सीखना उसमें। बेसिक बात यह है, व्हाट प्रॉब्लम इज गेटिंग सॉल्व्ड एंड इज इट स्केलेबल। So key is that if we can solve one problem which is scalable and which is a problem for large masses, can really unlock the potential. In राजस्थान से अगर 2 स्टार्टअप हमको ऐसे मिल जाएंगी, हमारे को 1 लाख करोड़ रुपए का वैल्यूएशन मिल सकता है, which will beat everybody. यही गेम है पूरा का पूरा। AI के अंदर अनॉर्मस अपॉर्चुनिटी है। यहाँ बैठकर इसको आइडियाज को डिस्कस करना, उसको आइडिया को किल करने लायक चीज है, क्योंकि वो बहुत छोटी तरह से सोच होगा। लेकिन इट इज अबाउट 2 people कंपनी, 4 people कंपनी एंड क्रिएटिंग $1 billion यूनिकॉर्न। देयर इज नो, आई हैव नो डाउट, आई कैन टेल यू विद माई 30 years ऑफ बिजनेस एक्सपीरियंस एंड 5,000 people वर्क अंडर मी इन माई ऑर्गेनाइजेशन, I can tell you there will be a time which we all will witness a company, a startup with a single person and a unicorn. That time is not very far. Single person company and a unicorn company. That all will become true. It is not very far from there. Because that does not require too many people. जो ये agents बोल रहे हैं, आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर एजेंट मिलेगा, HR एजेंट मिलेगा, अकाउंटेंट एजेंट मिलेगा, बिलिंग एजेंट मिलेगा, टैक्सेशन एजेंट मिलेगा, ये सारे एजेंट्स के काम करेंगे। ये एजेंट्स इनके पास होंगे, ये बनाएंगे, हम लोग ही बनाएंगे बैठ करके। कोई टैक्स एजेंट बनाएगा, कोई फाइनेंशियल एजेंट बनाएगा, कोई ईमेल एजेंट बनाएगा, और ये एजेंट्स मैं हायर करूंगा एंड आई विल बी द CEO ऑफ द कंपनी एंड द फ्यूचर। एंड स्पीकर सर, आपको बताते हुए आप आश्चर्य करेंगे, एक सरकार है, मैं नाम भूल गया हूं, उसकी कैबिनेट में एक AI मिनिस्टर है, और वो आदमी नहीं है, वो इंसान नहीं है, कंप्यूटर है। आप गूगल करेंगे तो आप मिल जाएगा आपको। दैट इज ऑलरेडी हैपनिंग, ये ऑलरेडी हैपेंड। आप सोच के देखिए कि आपके असेंबली में एक चेयर खाली पड़ी हुई है और वो AI MLA है। तो ये फ्यूचर है, ये होगा, होने ही वाला है, और ये लॉ बन जाएगा, एक AI MLA भी बैठेगा, वो सारी सुन रहा है, वो किसी पार्टी का नहीं है, वो इंडिपेंडेंट आपका आदमी है, ये भी होगा। तो ये एक नई चीजें निकल करके आएंगी, हमको नहीं पता है क्या निकल के आएंगी, लेकिन ये सब कुछ संभव है और ये होगा। और मेरे को ऐसा लगता है, इसका लास्ट वर्ड है समीर मेरा कहने का, जो चीज हमें लगती है सपना है, ये बेवकूफी भरी बात है, मेरा ऐसा मानना है वही सच हो जाएगा, और यही होता आया है पिछले 15 साल में। On that topic of job losses in government, Speaker sir, what is your big idea? जिस तरह से वर्ल्ड आगे बढ़ रही है, उसके साथ सबको बढ़ना होगा। जैसे इन्होंने कहा कि मिनिस्टर और MLA तक के भी AI का रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट इज़ एक्सट्रीम आल्सो, बट नाउअडेज इट सीम्स दैट इज गोइंग टू हैपन। और उसमें न इंडिया पीछे रह सकता है, न राजस्थान पीछे रह सकता है। हर एक को उसको लेना तो पड़ेगा, लेकिन उसके अंदर कम से कम मैं भारत या राजस्थान के संदर्भ में सोचता हूँ कि यह कंट्री
इमोशंस के साथ जुड़ी हुई है. We also take care of the emotions also, not only depend on the wholly on the machines. तो AI तो हर क्षेत्र में आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता. लेकिन कहाँ इसको कितना उपयोग करना है, ये ज़रूर हमको, जैसा मैंने पहले भी कहा, इस पे विचार तो करना पड़ेगा. अमेरिका में, इंग्लैंड में अलग ढंग से इसका उपयोग करेंगे, लेकिन वही कम अबाउट द इंडिया, भारत के बारे में विचार करेंगे, तो फिर भारत में इसका दूसरा रूप मिलाना पड़ेगा. कुछ उसमें मॉडिफिकेशन सॉफ्टवेयर में करनी पड़ेंगी, कुछ उसमें सिस्टम को डिसीजन मेकिंग के समय हमें कुछ सोचना पड़ेगा. और पर्टिकुलर इन राजस्थान एरियाज, अब ये दूर दूर तक पहुंच तो नहीं सकता. और दूसरा इसमें मेरा एक जो सबमिशन है कि भारत में मैन पावर बहुत अधिक है, पॉपुलेशन भी बहुत अधिक है. कहीं हम फुल्ली इस पर डिपेंड जाते समय हम एक वर्ग को तो इसके साथ जोड़ लेंगे, उसको बेनिफिट्स भी आम जनता तक पहुंचा देंगे, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट चाहिए वो हम क्रिएट भी कर रहे हैं, लेकिन उस प्रपोर्शनेट में क्रिएट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं जो पॉपुलेशन है. इसको भी अपने को कहीं ध्यान में इन स्टार्टअप में रोकना पड़ेगा. और फिर कौन सा स्टार्टअप, कौन सा ऐप बच्चों तक जाना चाहिए, कौन से यंग तक जाना चाहिए, कौन सा बुजुर्गों तक जाना चाहिए, इस पे भी कहीं ना कहीं विचार करने की आवश्यकता है. नहीं तो बच्चों के पास ऐसे टूल्स पहुंच जाते हैं जो हो सकता है कि हमारे देश के लिए, हमारे लिए हानिकारक हो. और आज तो जब वर्ल्ड एक ग्लोबली बन रहा है तो देश में कई दुश्मन भी हैं, बाहर भी हैं और सिक्योरिटी भी है. उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा AI का, कौन सी चीज़ कहाँ जानी चाहिए और किसको कितना प्रोजेक्टर हो. जैसे कहते हैं ना, कई बार पर्सनलाइज निजता भी सेफ रहे, सिक्योरिटी भी रहे, नेशन भी रहे, और उसके साथ हम ग्रोथ भी आगे करते रहें और कंट्री कहीं टेक्नोलॉजी में पीछे न रहे. इसको भी देखने की आवश्यकता है. और मुझे लगता है कि हमको हर फील्ड के लिए तैयार रहना चाहिए मेंटली कि हर चीज़ में AI आएगा और उसको अपने को एक्सेप्ट करते हुए उसके उपयोग के लिए व्हाटएवर उसके ऊपर कॉन्स्टेंट लगाने हैं वह हम लगाते हुए इसको आगे बढ़ेंगे, तो हम दुनिया के साथ कदम से कदम मिला करके चल पाएंगे. नहीं तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे और फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे. तो इस समय जो देश का लीडरशिप है या स्टेट की लीडरशिप है वो इसको बढ़ावा देने में आई है. राजस्थान में बहुत स्कोप है, AI आई है. और अभी तो कई जगह हमने IT पार्क भी स्टार्ट किए हैं. पर्टिकुलर आई कैन से एट अजमेर विच इज़ माई कॉन्स्टिट्यूंसी, IT पार्क वी हैव स्टार्टेड. तो कंपनीज आएँ और एम्प्लॉयमेंट शुरू करें, जनरेट करें. तो पर्टिकुलर केवल कैपिटल या बड़े बड़े शहरों में नहीं, नीचे भी हम जाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट के लिए भी आजकल आवश्यक है. डाटा सेंटर जैसे बनाते हैं, जैसे कहा एक डाटा सेंटर में 3-4-5 हज़ार लोग तक भी उसमें एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं. तो ये जनरेट तो करना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ जो मैंने कहा सावधानियाँ भी, प्रिकॉशंस भी हमको लेते हुए बढ़ना पड़ेगा. I can say that much also, and we are very ready. राजस्थान is ready to accept everybody. और ये जो हुआ है DigiFest, ये उसका एक प्रमाण है कि राजस्थान is ready to take every place. और मैं जब देखा है कि कई लोग स्टार्टअप पे काम कर रहे थे और इन एवरी फील्ड दे वर वर्किंग, तो मैं समझ इट इज़ वेरी, आशा की किरण हमको जगती है कि हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ करके देश में सिरमौर राजस्थान बनेगा. आई होप दैट्स ऑल. आप बहुत बहुत धन्यवाद. इस तरह के मुझे लगा कि आप लोग से इंटरेक्ट करने का जो मौका मिला. राजस्थान में सबका स्वागत है. आई कैन से ऑन दैट यू कम and enjoy here and work here and have the precautions. With the precautions, we also welcome to everybody. Thank you. Thank you, sir. What an amazing class this has been today, and in any class, teacher has the last word. So, Professor Ramesh, your thoughts, and then that is true. As a professor, I must give a homework at the end of the class. But I do feel, Mr. Speaker, thank you very much for hosting us in Rajasthan. And I do feel very welcome here. It's an amazing state, not just in terms of its beauty and amazing people, but also its technology and innovation. And so, Dr. Data and I would love to continue the conversation with you. And you have two homeworks, okay? One is we want you to go to projectnanda.org, right? projectnanda.org, and create your own AI agent there. Just click on the links, create your own AI agent, and send me a link. Dr. Ajay Data will also have his own AI agent. And tomorrow, it's the Region AI Summit. So there'll be a lot of discussion on how we can take this idea
of AI agent for everybody forward. So we want you to participate in that, only if you have created your AI agent tonight. And right after this session will be available outside if you're interested in working on AI agent for every citizen. Who's here might be interested in working on that? Okay, excellent. So let's meet outside. Thank you. Thank you. Thank you, gentlemen. To close this, I just made this point that AI for India is a black swan moment. It won't happen every day. It has given India an opportunity to actually become a global leader. Because it's no longer about software development, it's not about technology, but also applying the power of data and AI into every walks of our life, whether you are a government, whether you are a student, whether you're in academia, a researcher, startup, MSME, whoever you are, you can use the power of AI and create something that has creates a global benchmark. And all of us here and all of you has a very important role to play in harnessing the power of AI. With that, I close this session. Thank you all of us. Thank you all of you gentlemen, and of course all of you in being very patient. And tomorrow we continue this discussion on AI and see what we can learn more from it. Thank you so much, everyone. Thank you so much for the session, sir. I'm sure that we all got really deep insights about AI and all the nitty-gritties of what I'm sure we all must be looking for. Thank you once again to all our speakers and to moderator for asking the relevant questions. I'm sure a lot of questions asked here must be the question in your mind that were addressed here. It's now time that we move on to the next session of the day.